हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ लीड कोड डेली चैलेंज प्रॉब्लम 916 वर्ड सबसेट्स। ठीक है, ये मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। चलिए पहले प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। यू आर गिवन टू स्ट्रिंग एरेस वर्ड्स 1 एंड वर्ड्स 2. स्ट्रिंग B is a subset of string A if every letter in B occurs in A, including multiplicity. For example, WRR is a subset of warrior because you can see that here the occurrence of W is 1 and occurrence of R is 2, whereas in warrior there is also occurrence of W is 1 whereas the occurrence of R is 3, means that the occurrence of R in this WRR should be present in the main string which is warrior. Okay, but it's not the subset of world because we can see that here the value of R is means that the number of times value occurs is only 1, whereas in WRR the number of times R occurs is 2, so it's not a subset. Okay, a string A from a word 1 is universal if for every string B in words 2 B is a subset of 2, B is a subset of A. Okay, return an array of universal strings in words 1. You may return the answer in any order. Means that they are saying that we have to extract a string B such that B is a subset of A. Okay, so see, first example you can see that E and O. Okay, so you can see that E. In the first word Amazon, we can see that there is never any occurrence of E, whereas there is occurrence of O. But we have to consider the occurrence of both E and O as, so you can see that it's not a so you can see that they are not the subset of this Amazon string, so it's not in the answer. And EO is not present neither in Apple because here E is present whereas O is absent, but in the Facebook you can see that E as well as O is present both, so it can be a possible answer. So we will push back into our string. Okay, now you can see that in Google you can see that there is occurrence of E and as well as O, so this can be our answer. And next is the occurrence of Leetcode. There is occurrence of E and O, so it can be also our answer. So see, what we have to do is in this is that, let me copy the example. See, you have been given a string B. Okay, there is a string A and there is a string B. Okay, let's we have pasted the example. Thank you very much. Okay, so see, there is Amazon, Apple, Facebook, Google, and Leetcode, which is present in words 1, and there is words 2, which is E and O. Okay, so what first you will do is that you will maintain a loop. You will maintain an array of frequency, max frequency, means that if you encounter E, okay, first word of words 2, if you encounter this, then you will increment the character count in a max frequency array. So we will maintain, because we know that there are 26 characters, so we'll maintain from 0 to 26 an array, and 0 represents the occurrence of A and 1 represents the occurrence of B, and we will represent the occurrence of the each character which is present in the word, each string of words 2. So here E is present only once, so we will maintain E1. And now we will compare with the max, and our max initially contains the 0 occurrence of every character, so we can see that there is only one character occurrence of first string of words 2, so mf of E will be equal to 1. We have to take maximum. Now it's 1. Okay, now we jump to second character which is O, and you can see that in the frequency array that you will maintain that O will be, frequency of O will be 1, and you will compare in MF, you will take as max of MF of I, and the frequency of I that you will maintain for each word of words 2. Okay, and you will take the max. So initially all the slots of 26 will be 0, and we will change the slots as the maximum of frequency of MF of I and F of I. So you can see that MF of 0 is 0 and F of 0 is 1.
So mf of 0 will be max of 0 comma 1, which is 1. So frequency of O will be 1, and E, which is present from the previous string, here also it is 1. So ठीक है, तो ये हमने बना ली एक हमने एरे बना लिया मैक्स फ्रीक्वेंसी का, जिसमें हमारे पास जो वर्ड्स टू में कर रही है स्ट्रिंग्स, उनकी सारी कैरेक्टर्स, जैसे पहला स्ट्रिंग है उसके जो कैरेक्टर के अकरेंस कर रहे हैं उनमें से हमने मैक्स काउंट ले लिया सारे कैरेक्टर का, जो भी वर्ड्स टू में जो स्ट्रिंग है। ठीक है, अब देखो जो वर्ड्स टू है, वर्ड्स वन है, अब इसमें हम एक एक स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे देखेंगे अमेजॉन, देखो मैं लिखता हूँ अमेजॉन, ये है। अब इसका हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एरे बनाएंगे जिसमें ए का काउंट होगा 2, एन का काउंट होगा 1, एंड जेड का काउंट होगा 1, एंड ओ का काउंट होगा 1, और एन का काउंट भी होगा 1। और इसमें हम चेक करेंगे, हम एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे, उसमें हम इसका काउंट जो होगा, ये पर्टिकुलर काउंट और ये, इसको एक हेल्पर फंक्शन में भेज देंगे। फिर हम देखेंगे अगर हमारा जो रिक्वायरमेंट, हमें ये रिक्वायरमेंट है, अगर ये प्रेजेंट है इसमें, इस वाले जो एरे में है प्रेजेंट है, तो ये एक सबसेट हो सकता है। अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ये सबसेट बन नहीं सकता, तो हम स्ट्रिंग को डालेंगे ही नहीं हमारे आंसर में। ठीक है, अब तुम देखो नेक्स्ट कैरेक्टर देखो तुम, एप्पल भी नहीं हो क्योंकि इसमें ओ नहीं है। तो देखो हम फेसबुक देखते हैं, फेसबुक ठीक है, अब फेसबुक में देखो क्या होगा, एफ का काउंट होगा 1, ए का काउंट हो गया ए एंड 1, सी हमारा एक ही बार आ रहा है तो सी भी एक बार हो गया, ई आ रहा है हमारा एक बार, ये हो गया, अब बी आ रहा है हमारा एक बार, ओ आ रहा है 2 बार, और के आ रहा है लास्ट में एक बार। ठीक है, अब देखो इस काउंट को हम देखेंगे, इसमें हमारा जो ओ प्रेजेंट है, हाँ ओ प्रेजेंट है, ये देखो ये प्रेजेंट है हमारा ओ, और ये प्रेजेंट है हमारा ई। तो ये दो हमें देखने हैं, हम 1 से लेकर 26 कैरेक्टर तक दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे। अगर एक जगह भी हमें पता चल जाता है जो एमएफ में है हमारा, जो इसमें है इस पर्टिकुलर में है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जो इसमें प्रेजेंट है उससे ज़्यादा है तो फिर फॉल्स रिटर्न कर देंगे, एल्स वी विल कंटिन्यू iterating until the 26th character, and if it does not return anything, at last will return true. So this string will be included, and hence Facebook will be included in our answer. So let's check out its code. See, this is vector of string answer, so let's return the answer, and we will maintain the max frequency array of 26 characters, and we will initialize it with 0. Okay, एंड फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग, जैसे वर्ड्स टू की हमने एक स्ट्रिंग निकाली एस, तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर पहले एक फ्रीक्वेंसी एरे बना रहे हैं, फिर हम उसमें जो कैरेक्टर प्रेजेंट है उनकी फ्रीक्वेंसी इस एफ में डाल रहे हैं, फिर हम मैक्स फ्रीक्वेंसी को अपडेट करें, मैक्स एम एफ ऑफ आई इक्वल टू मैक्स ऑफ एम एफ ऑफ आई कॉमा एफ आई। ठीक है, ऐसे सारे वर्ड्स में जो कैरेक्टर है उनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे एम एफ आई में पड़ जाएगी। फिर हम एक एक वर्ड चेक कर रहे हैं, वर्ड्स वन का, उसकी फ्रीक्वेंसी का एरे बना रहे हैं हम, और फिर एक हेल्पर फंक्शन पास कर रहे हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी और एम एफ एरे। अगर हमें एक टाइम पे भी हमें मिल जाता है कि एम एफ ऑफ आई में जो फ्रीक्वेंसी है वो बड़ी है एफ ऑफ आई से, तो ये हमारा कभी सबसेट बन ही नहीं सकता, तो हम रिटर्न कर देगा फॉल्स, और अगर कुछ रिटर्न नहीं हो रहा तो लास्ट में रिटर्न करेंगे ट्रू, और ये हमारा पुश बैक हो जाएगा स्ट्रिंग में। ठीक है, अब लास्ट में तुम्हें आंसर रिटर्न कर देना है और तुम्हारा कोड चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द सॉल्यूशन यूजफुल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज फ्रेंड्स लाइक और शेयर करिए मेरे चैनल।